3 days, a new century, a spiritual gathering, and one leader, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, guiding, loving, and inspiring. We are now in the second week of Huzur's historic tour in Germany. Here in this very land, events continue to unfold that awaken the soul and unify the community. Sie kommt unter dem Motto zusammen: Liebe für alle, Hass für keinen. Die muslimische Gemeinde Ahmadiyya. Die deutsche Ahmadiyya-Gemeinde feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Anfangs nur einige wenige, sind es inzwischen mehr als 40.000. Beim Freitagsgebet rückt alles Weltliche erstmal in den Hintergrund. Das geistliche Oberhaupt der weltweiten Ahmadiyya-Glaubensgemeinschaft, der Caliph, betet vor. Ein stilles Gebet, bevor es losgeht. Der Caliph kommt aus London angereist, hält mehrere Predigten während der Jalsa Salana. Diese werden für Livestreams simultan in 13 Sprachen übersetzt. After 4 long years, the anticipation culminates with the flag hoisting ceremony and the Friday sermon, marking the official start of the Jalsa Salana Germany 2023. Ahmadis have travelled from all over Germany as well as the neighbouring countries to be part of this spiritually enriching event. Vor einem Meer aus Gläubigen in einer der großen Stuttgarter Messehallen sprach Caliph Mirza Masroor Ahmad. Das geistliche Oberhaupt der Ahmadiyya-Gemeinschaft forderte von seinen Zehntausenden Zuhörern eine ständige spirituelle Erneuerung. दोबारा इकट्ठा होने का मौका दिया है तो एक दूसरे को मिल लेंगे कुछ मजलिसें लगा लेंगे और बस नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मकसद जलसे के इनेकाद का जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है और बड़े दर्द से इसका इजहार भी किया वो ये है कि आपकी बैत में शामिल होने वाले दीनी इल्म सीखें, रूहानियत में तरक्की करें, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ और मोहब्बत में बढ़ें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल पैरवी करने वाले हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ताल्लुक़ हो, दुनिया की मोहब्बत ठंडी हो और दीन मुकद्दम हो. On the second day, the spotlight shifts to Lajna as Hazrat Khalifatul Masih addresses the audience from the ladies' Jalsa Gah, emphasizing the role and contributions of women in the community. बावजूद ऐहद दोहराने के कि हम दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखेंगे, हर एक को अपने जायज़े लेने चाहिए कि क्या इस ऐहद की हम पाबंदी कर रही हैं. While addresses form the core of this gathering, the schedule also includes meetings with guests and dignitaries. The first meeting of the day occurs with members of the German Parliament. Thank you very much for coming here to attend our function here. I can say for the Ministry President of Baden-Württemberg that we are very glad to have you here, the Ahmadiyya in Baden-Württemberg. How is the current situation in Pakistan? Is it going better or is it worse? Or is it the same like for as long as the law is there and they are giving free hand to the so-called mullahs or clerics and extremists, I don't think that situation can be better. And these communities, the mosques in Germany, do you have these relationships to other communities in UK, in France, all over the world? Yes, we are a very well-organized, well-knitted community all across the world. We are almost in more than 200 countries of the world, and they are all under one umbrella, that is one leadership. And our television station is delivering my sermon every week in different languages. Almost 8-9 languages are being translated simultaneously, so people understand. Next, Hazrat Khalifatul Masih graces a special session where he addresses guests who have come to learn more about the Ahmadiyya Muslim community.
Every person is free to accept or reject its teachings. Islam does not permit Muslims to propagate their faith coercively through the abhorrent and destructive power of swords, bombs, or guns, but instead calls on them to use reason, evidence, and love to win the hearts and minds of mankind. देखो खुदा ने एक लोगों ने तो मैंने कहा 1 घंटे की तकरीर सुन ली, 2 घंटे की, 1.5 घंटे की तकरीर, लेकिन ये नहीं अंदाज़ा होता अक्सर लोगों को शायद कि इसके लिए हज़रत साहब ने कितना वक्त लगाया होगा और वो तकरीर तैयार होकर फिर लोगों के सामने आई है। और ये सारी की सारी उनकी अपनी ज़ाती तवज्जो, मेहनत और दुआओं के बाद ये शक्ल में ढल रही होती है जो वो बयान फरमा रहे होते हैं। तो ये मतलब डाक, तकरीरों की तैयारी, मुलाकातों में भी फिर आम मुलाकातें हैं, फैमिली जो होती हैं, मुबल्लिगीन की मीटिंगें हैं, फिर उसके बाद जो मेहमान आते हैं उनकी हैं, फिर वफूद जो आते हैं उनकी मुलाकातें हैं। तो मुलाकातों में भी कई किस्म के मतलब फिर उन लोगों से हर एक से उनके मुल्कों के हालात के लिहाज से बातें करना, मालूमात पूछना, उनसे उनके मुल्कों के हालात पूछना, ख़ुद उनको रहनुमाई फरमाना, ये सारा कुछ इन मुलाकातों के दौरान हो रहा था और ये इन्हीं चंद दिनों के अंदर अंदर हो रहा था। मैंने आज की मुलाकात में जो अखलाक और इंसानी दर्स जो देखा है वो मैं इसको बहुत ज़्यादा मैंने इसको फ़ील किया इस चीज़ को कि ये बहुत अच्छी तालीमात है। ये इन्होंने पाकिस्तानी कपड़े पहने हुए, ये ताजिकिस्तानी कपड़े हैं। बलूचिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी की सबक खानी करते हैं। से लॉ सर इन्होंने पढ़ा, इन्होंने लॉ पढ़ा वहाँ से। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा अच्छा। की फरामोश करना कहते 30 साल से ज़्यादा हो गया, मुझे उर्दू भूल गई है। थोड़ा थोड़ा उर्दू आती है। अच्छा, ये लिबास जो है पाकिस्तानी है। हाँ, कहते मुझे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, क्या हाल है तमाम और भाइयों का, बहनों का? अच्छा, माशाल्लाह। ورجاء قمت بإرسال رسالة في 13/7. أرجو المباركة بخطبة ابنتي على فاطمة اللبابيدي على الشاب محمد سلمان، ومعي الخواتم أرجو أنه تباركوا، إضافة إلى خاتم لزوجي. والأخت هنا من مصر لديها أيضا طلب رجاء، ممكن أن تتكلم؟ ठीक है, जल्दी से आ जाएं, कुछ नहीं। और इसके अलावा कोई बात? इसकी शादी अब ये तो पहले कई दफ़ा मिल चुकी है मुझे। नहीं, वो इनकी बेटी ऐना बिन्तो, बेटी इनके पीछे है। अच्छा, यक़ूल अमीरुल मोमिनीन बिन्निस्बा इलल-उख्त नस्मा, ये जो बैठी है ये तो मिलती रहती है। इन्नहा क़ाबलतनी अक्सर मिन मर्रा, ये मिस्र से हैं। अल्लाह ताला सब जो अहमदी हैं, यहाँ पुराने अहमदी हैं, नौवाइन हैं कुछ, उन सब को इस्तिकामत अता फरमाए और तरक्की करने वाले हों दीन में, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा करने वाले हों, और जिस मकसद के लिए हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम आए थे कि हुकूकुल और हुकूकुल इबाद की अदायगी की तरफ तवज्जो दिलाना, उनको सही तौर पर सरअंजाम देने वाले हों। Also ist toll, es ist voll, ich kann das nicht erklären, ich kann das nicht sagen genau, aber da sagen wir immer Alhamdulillah, das haben wir Khalifa immer so Kontakt gehabt. Das ist unglaublich, kann man sagen. Das ist unglaublich, aber Alhamdulillah kann man sagen auf Arabisch in die Marke Masroor, das heißt, ich bin mit dir immer Alhamdulillah, das könnte ich sagen, nur Alhamdulillah. Und das erste Mal, ich weiß nicht, wie es drinnen mir hat gemacht. Und ich bin sehr glücklich, sehr glücklich. Deswegen kommt Khalifat Nasrallah, das ist, was ich sage, kann man nicht beschreiben. Wissen Sie? Ja, das alles, wenn man sehen, ist
nicht so einfacher. It's a short time, but it was like amazing. I can't like feel my express my feeling. It's unbelievable. إلقاء بعض الأبيات من قصيدة إن هذا الشيء ممكن. पढ़ दो 2 शेर पढ़ दो. يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن يا بحر فضل المنعم المنان تهوي إليك الزمر بالكيزان. On the final day, the bay'at ceremony ensues. Each word that is spoken seems to reverberate through the atmosphere, resonating with the collective heart of the community, as though the very earth is pulsating in harmony with its spiritual aspirations. أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. आज मैं मसरूर के हाथ पर बैत करके जमात अहमदिया मुस्लिमा में दाखिल होता हूँ. What I felt also was something like a wave, something like they were respiring with one rhythm. It was like when you on a shore and you see the waves and you hear the sound of the waves. Everybody was breathing as one, and this breathing as one was very strong. Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam खातमुन नबीयीन हैं. बस आज के तरक्की याफ्ता लोगों को तो आज इस बात का ख्याल आया है कि ये कानूनी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, लिखना पढ़ना होना चाहिए, लेकिन इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले इसका तफसीली हुक्म दिया है ताकि तिजारत और लेन देन और कारोबारों में बग़ैर किसी फितने और झगड़े के आराम से सारे काम होते रहें. As the curtains close on Jalsa Salana 2023, an emotional and electrifying atmosphere fills the air. हमारा था वो अब दिलबर का सारा हो गया, आज हम दिलबर के और दिलबर हमारा हो गया. Hazrat Khalifatul Masih leaves the stage, walking amidst an ocean of hands waving goodbye, etching this moment into the hearts of all present. Before Hazur's departure, new converts have the opportunity to meet Hazur. अच्छा, क्या कहती हैं? ठीक ठाक है, जलसा ठीक गुजर गया इनका? The contribution of all the volunteers, of all ages, that was like really impressive. How many people support this event? It was my first Jalsa Salana I've ever met. And I embraced Islam 2022 in September. And what made you to accept Ahmadiyya? In the end time, the Holy Messiah was expected. And that's why I started to studying about, thinking about, and then you found out it from through internet. Absolutely, from website, yes. Okay, yes, because we're living in a world between of George Orwell. You didn't have any personal contact with any Ahmadi before you came to know about Ahmadiyya? No. No. Nothing. It is through internet that you... Yes, through the internet, and then I went to the masjid in Adelstedt. Time stands still as Hazrat Khalifatul Masih departs the Jalsa site. A unified voice rises, chanting slogans of Inni Ma'aka Ya Masroor, O Masroor, I am with you, as Hazrat Khalifatul Masih travels back to Frankfurt. I'm a Christian and I believe in God. And when I saw all these people so peaceful, so kind, heartful,
I thought if the whole world would be like the Ahmadiyya, we won't have any problem. I was very, very impressed. Back at Bat Sabu, nearly 20 delegations are graced with the opportunity to sit in the presence of Hazrat Khalifatul Masih. आज हम दिलबर के और दिलबर हमारा हो गया जो हमारा था वो अब दिलबर का सारा हो गया आज हम दिलबर के और दिलबर हमारा हो गया आज हम दिलबर के और दिलबर हमारा हो गया शुक्र अल्लाह मिल गया हमको वो लाले बेबदल क्या हुआ अगर कौम का दिल संग खारा हो गया शुक्र अल्लाह मिल गया हमको वो लाले बेबदल Every person realizes this fact that they have to live amicably. Being a human being, we should all respect each other and love each other, then we can live peacefully, and that is how we can create peace in the world. In the desert they have a saying, normally there are no clouds, and when there comes a cloud and you have shadow on you, they call it the hand of Jesus, of Isa. Or when it's a sandstorm and then you must wait and then the sandstorm goes away and suddenly you see a little bit of the blue sky, they call it the smile of Jesus, of Isa. Something similar I saw with the Khalifa. When he smiled at me, it was the smile of Jesus, of Isa, of a Messias. It's the same smile. That's what he got in his eyes. He's smiling with his eyes at you. And it's the same feeling. It's something like a blessing. And what we need? Well, we need money, we need food, but not too much. But what we need is spiritual energy, or blessings. And that's what I felt here. It was the first time I'm meeting Khalifa and first time in Jalsa Salana also. It was a very warm and nice meeting, all delegation of Lithuania. So we were welcome as members of community. We could ask without a fear any questions. We like to know more about Islam. So it was a truly amazing experience for us all. Among the delegations, there are Ahmadis for whom the journey to this part of the world was not easy, but the pull of love for their beloved Khalifa made it all worthwhile. I am the poor man, but I try. My 5 years fees money, I buy ticket for see you. Thank you very much. Every day. Before I pray anybody, first my Khalifa inni makaya Masroor. Every day, I'm standing by for you. I can pray you, I cry. Thank you very much. 45 years I'm crying. Okay. Jazakallah. कितने साल हो गए हैं जो हमने पास किए? आज 14 साल. अच्छा माशाल्लाह. दिल को मज़ा आया ये कह सकते हैं अभी भी इसके जायका दिल में है और हुजूर से मिलके हमें और ताकत मिल गया मेरा नाम आलम का है मैं स्पेन से आया हूँ स्पेन से आए हो उर्दू सीख ली स्पेन में जाके उर्दू वहाँ पाकिस्तान सीख लिया गाना जामिया से जामिया मुबशरीन से अच्छा मुबशर बन के भी उर्दू सीख ली कमाल कर दिया मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ रियल स्टेट में बांग्लादेश में अच्छा मैं तो समझा आप स्टूडेंट है छोटे से लग रहे हैं ये देखने को लगता है कि दिस इज बिकॉज़ ऑफ माय जीन्स आई गेस जेनेटिक्स अच्छा जी Overflowing with love and affection,
they brought gifts to present to Hazur. And let's not forget the youngest among us. For children, these were special moments too. जो हमारा था वो अब दिलबर का सारा हो गया आज हम दिलबर के और दिलबर. Each mulaqat resulted into a tapestry of memories and emotions that will be cherished forever. के और दिलबर हमारा हो गया जो हमारा था वो अब दिलबर का सारा हो गया आज हम दिलबर के और दिलबर हमारा हो गया. Höchster Besuch im Rems-Murr-Kreis. Der Kalif der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde ist zu Gast in Waiblingen. Ihn vor Ort zu sehen ist für viele Ahmadis eine Ausnahmesituation. Normalerweise lebt der Kalif in London, ist ständig unterwegs. Gestern eröffnet er die Nasir-Moschee. Following the buzz of Jalsa Salana, the very next day becomes another historic chapter for the Ahmadiyya Muslim community. Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasrihi al-Aziz, graces the town of Waiblingen with his presence, where he inaugurates the newly constructed Nasr Mosque. The speciality of this Jamaat is nobody is jobless. Everybody is in service. Everybody is working, eh? Yes. तुम भी काम करते हो? स्टूडेंट हो, हैं? स्कूल जाते हो? हाँ जी. आप बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह. ये टेररिस्ट दिखाना चाहिए. पुराने मिक्स ही हैं. आपने मेरा नाम चूज किया था कि कमाल कर दिया. पार्किंग का यहाँ पे पूरे दिन का 2 लोगों है पार्किंग का. पार्किंग है. शायद तक पार्क एंड राइड लोग पार्क करके यहाँ से जाते हैं शहर में जॉब के लिए और डेली 100 of people जो है वो मस्जिद को. या मसरूर. ले आओ. छोड़ दे जाने दें. हो गया मिट्टी ले आए.
State Secretary there. Concluding his visit, Hazrat Khalifatul Masih addresses a formal ceremony in a nearby hall to inaugurate the Nasr Mosque. यहाँ के मेयर, हमारे इलाके के काउंसलर्स और अवाम जो लोग हैं, हमसाए हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मस्जिद की तामीर में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर तरीके से हमारी मदद की। अल्लाह ताला हमारे सब अहमदियों को जो यहाँ रहते हैं इस बात की तौफीक दे कि आप लोगों के लिए वो सुलह, अमन और आश्ती का एक सिंबल बन जाएं। इस दुआ के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। Ich weiß nicht, so eine Art, ich weiß nicht warum, aber auch beruhigend, muss ich sagen. In irgendeiner Weise beruhigend auf mich auch. Ich kann nicht sagen warum, aber wirklich beruhigend auf mich und ja, auch wieder unbeschreiblich irgendwie. Also die machen mit einem was, aber ich kann nicht beschreiben was. Das ist so ein bisschen... Er ist eine sehr beeindruckende Persönlichkeit und ja, man merkt, dass da was dahinter steckt, hinter seinen Botschaften. Ich glaube, weil ich gemerkt habe, dass es für sie ganz besonders war, dass ihr Oberhaupt da war. So, das hat man gemerkt, die Stimmung hat man wahrgenommen, dass das ein besonderer Moment war. Eine, die Interesse geweckt hat, bei mir vorbeizugucken in Waiblingen jetzt und wirklich mit den Leuten mal ins Gespräch zu gehen, einfach reinzukommen, die Moschee als offenen Ort wahrzunehmen. Es war so vielfältig, so viele verschiedene Menschen waren da. Ich habe gemerkt, das ist schon eine sehr große Veranstaltung. Dann, wie ich reinkam, die Sicherheitsvorschriften und das alles, Sicherheitskräfte überall, da habe ich, oh, was ist das? Und dann habe ich aber nie irgendwo während der ganzen Veranstaltung irgendeinen Stress gespürt. Und das ist für mich ein ganz tolles Zeichen für so eine große Veranstaltung. Ich habe öfter größere Veranstaltungen miterlebt, aber dass es dann so harmonisch verläuft, auch so freudig und kommt kein Stress auf und so, ja, es war eine friedliche, schöne, festliche Atmosphäre. Dadurch sollen Vorurteile abgelegt werden. Das betont der Caliph in seiner Rede. Die Moschee sei ein Ort für alle, soll neben der Religion auch Weiterbildung und Erziehung fördern. How proud I am Yeah. by opening the mosque. You see, wherever we open our mosque, instead of being proud, we become very much humble. Yeah. And bow before Allah the Almighty, the omnipotent God, that He has given us the chance to open a place of worship in another town. Why are the mosques so important? Religion has two purposes. One, to worship the one and omnipotent Allah, the Creator. One, to discharge your duties you owe to your Creator, towards your Creator. And secondly, you discharge your duties you owe to your fellow beings. So this is the main thing for which mosques are built and for which the planning is made in the mosques. You also want to build a bridge for other cultures. For example, the importance of intercultural exchange. We are always ready to have dialogues with others. And this is why we try to hold interfaith religious conferences. And we held a very international religious conference just some few years ago in London. We are always ready to build bridges between the cultures and the religions and the societies, so that you can create peace and love and harmony in your society and in the world at large.